Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining and coming to my show Coffee with Taufiq. और एक और मुनफरद शो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मलिया जो कि यूके से हैं और समीरा जो हैं ये दुबई से ताल्लुक़ रखती हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी और इसकी जो बेसिक्स हैं उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और आने वाले वक्तों में इसमें और भी आपको सेशंस मिलेंगे और इसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, मगर आज इसका ये पहला एपिसोड है। तो इससे पहले कि हम अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, आई विल आस्क मलिया टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड देन समीरा, हु यू आर, व्हाट डू यू डू, प्लीज। Assalamu alaikum. My name is Maliha Nadeem. I am working in a UK as an IT lecturer in college. Yeah. Okay, that's great. So, जी समीरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा खान है। I live in Dubai. I work as a risk analyst in the cyber domain and basically risk assessment to cyberspace in general, information security, cybersecurity, stuff like that. वेरी नाइस। दो तजुर्बेकार लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, तो आज इनका फ़ायदा उठाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। समीरा, इफ़ यू कुड डिफाइन, अगर आप डिफाइन कर सकें द बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी इन वर्चुअल स्पेस, इफ यू कैन टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट इट। देखिए, if the cyberspace is and we all, as we call it, cybersecurity. It's a quite a diverse topic. As you might know, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि होती है information security होती है और फिर होती है cyber security. And not all information is what we understand information is not relevant to come under the domain of cybersecurity. Lekin essentially, the reason why I will just I would suggest we keep the discussion over to cybersecurity is that is the most dominant of all usages right now. हमारी cyberspace जो है it has expanded momentous और social media, हमारी अपनी personal information, हमारी critical and financial information, it has just migrated, everything has just migrated to the web. And that is the reason why everything जो पहले on premise रहती थी, जैसे हमारे बैंक records हो गए, हमारी PII हो गई, हमारी personal identification information वो हो गई, हमारी दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो थी जो मैनुअल के एक ज़माने में समझी जाती थी, that is all just shifted now to cyberspace. And that is the reason why the necessity that was required कि जो चीज़ें लॉक एंड की में कभी रखी जाती थी या फिर जिनके जिसे कहते थे कि ताले हुआ करते थे या ब्रीफ केसेस हुआ करते थे, now that has shifted towards cloud, that has shifted towards servers, that requires maintenance, and that requires a lot of security. एंड अनलाइक द परसेप्शन के जो लोग समझते हैं ना कि हमने जी सेव कर लिया, पासवर्ड लगा लिया एक टाइम के ऊपर, when it all started, I'm not going to say that passwords were always the worst of the choices, but as we know, technology has dawned on us gradually and it's improved, and as it improves it gets better exploited too. So and crime is always one step ahead of it. And that's where the necessity of cybersecurity walks in. Thank you. जी जी, thank you समीरा for a short introduction कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, साइबर स्पेस है क्या, पासवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, हाउ टू स्टोर इट, हाउ टू सेव इट, हाउ टू मेक अ पासवर्ड, तो उसकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं। मलिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडिविजुअली, आई मीन फॉर यू, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ डू यू सिक्योर your passwords, your usernames, your private data? That could be anything, but how do you secure it? What steps do you take? Taufiq said, let's see, I can give you an example. Security is really, really important. Like Samira said,
The thing is, you just think about your house. Yeah, you got your house, and then you don't want any other person to get in, or you put your all the important documents, your passport, your very like valuable things like your jewelry, you put in a locker. Yeah. So the same with if you are on a virtual world, then you need to be very careful with all of your like your usernames, your password, your personal details, your mobile number, your email addresses. It's not like we put like we fill so many forms like in a daily basis. Like I'm a teacher, so मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं बहुत सारे फॉर्म्स हम फिल करते हैं, ठीक है। अब आपकी सिक्योरिटी के लिए फॉर मी डेटा प्रोटेक्शन इज रियली इम्पोर्टेंट। it's my data. I can't give to any like give any personal information to anyone or to everyone. सिर्फ रिक्वायर्ड आप फोन नंबर दे सकते हैं आप अपना, लेकिन आप अगर पासवर्ड्स पे आ जाए, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम इट्स बिकॉज यू नीड टू गिव टू समवन to connect with them, so username is absolutely fine. लेकिन जब आप अपने पासवर्ड्स पे आते हैं तो पासवर्ड को सिक्योर एक तो उसको आप ऐसा पासवर्ड रखें जो कि आपको याद रहे। उसके अलावा उसका जो सेकंड है वो ये कि कभी आपको ना मेमोरेबल वर्ड भी याद होना चाहिए टू कनेक्ट विद दैट पासवर्ड। उसको सेफली रखने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप किसी चीज के ऊपर लिख लें अगर आपको भूल जाता है, और हर अकाउंट का डिफरेंट पासवर्ड रखें, ताकि अगर किसी को पता चल भी जाए तो अगर एक चीज पता चली है तो दूसरी कम से कम सिक्योर रहे। तो राइट डाउन एंड पुट इट इन अ सेम प्लेस, सेफ प्लेस, सेम एज लाइक योर पासपोर्ट और योर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आपने लिख के रखा है और वो आपको याद भी रहे कि मैंने कहाँ रखा है। ये रहा किसी पेपर के ऊपर भी रख दिया और किसी भी ड्रॉअर में डाल दिया और बाद में फिर ढूंढते फिरे कि कहाँ गया। तो यूजर नेम इज it's absolutely fine if you want to share with somebody, but password you don't. मैं पासवर्ड्स मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करता हूँ दे ऑल हैव डिफरेंट पासवर्ड्स, सबके मुख्तलिफ पासवर्ड्स, और बहुत सारी कंपनीज अलाउ करती हैं आई मेक पासवर्ड्स इन पैराफ्रेज। Yes. पैराफ्रेज मीनिंग आई लव ट्रीज, आई लव मेरे घर के सामने पार्क है, आई लव बेशोर पार्क ट्रीज, it's just a one word, no uppercase, no lowercase, just a paraphrase. I love my daughter, जो भी नाम है daughter का। Can you forget your daughter name or son name? Of course not. So paraphrase, I use a lot of paraphrase in my passwords. So लेकिन on the other hand, what I do, how I use iPhone, right? So उसमें एक option होता है notes का, तो notes में जाके जो मैंने उसका हेडर बनाया हुआ नोट्स में जो फोल्डर का, उसमें मैंने लिखा हुआ अंग्रेजी में है लेकिन है उर्दू में, ज़रूरी पासवर्ड्स, बट आई हैव रिटन इन इंग्लिश बट यूजिंग लैंग्वेज उर्दू। इफ समवन हैक्स दे विल नॉट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो मेरे पासवर्ड्स हैं उस पे मैंने एप्लीकेशन का जो नाम है, फॉर एग्जांपल जैसे जीमेल है, तो मैंने उसका नाम रखा है घी खत, जीमेल। तो Right. तो मैंने उसमें जी खत लिखा है, तो अगर कोई हैक करेगा तो पहले सोचेगा जी खत है क्या चीज, अब मैंने अनलेस कि कोई आपके ना परेशानी हो। आईफोन नोट्स या किसी आप कोई भी मोबाइल फोन ले लें, उसके अंदर ये नोट्स और डॉक्यूमेंट्स वाली वो है। अब मैंने उसका नाम इसलिए नहीं लिया, समटाइम्स नहीं, मेरे अपने उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है फोन पे, और फेशियल रिकग्निशन ऑब्वियसली, तो वो मेरा फेस वो हो जाता है ओपन। अब अब अगर आप भूल गए आपका मोबाइल पासवर्ड, देन व्हाट विल यू डू? तो आई हैव बिल्कुल, सोल्यूशन फॉर इट। हाँ, वो मैं उसी बिल्कुल तरफ ही जा रहा था। लो लेवल पे जाके ना, मैंने इसलिए बताया कि यू नीड टू राइट डाउन समवेयर और पुट मैं समवेयर सेफली वेयर यू कैन रिमेम्बर। तो आई हैव टू लोकेशंस, एक आपको मैंने बता दिया। अब जो वो मेरा पासवर्ड है, जो भी पैराफ्रेज है, वो मैंने उर्दू में लिखा है लेकिन अंग्रेजी में लिखा है, तो बट व्हेन आई रीड इट आई विल नो कि उसकी अंग्रेजी क्या है। लेकिन इफ समवन हैक्स इट वुड नॉट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या तो मेरे सारे पासवर्ड जो हैं वो नोट्स पे लिखे हुए हैं,
और उन सब के स्क्रीनशॉट के बाद मैंने उसका एक प्रिंट आउट लिया हुआ है एंड इट्स इन माई लॉकर बॉक्स एट होम. Hmm. अगर मुझे नहीं याद आ रहा तो आई कैन गो टू माई लॉक बॉक्स, ओपन अप द लॉक बॉक्स, टेक आउट दैट पेपर प्रिंट आउट एंड आई कैन सी द पासवर्ड. सो व्हेन आई चेंज, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप frequently अपने पासवर्ड चेंज करें, even if it's a paraphrase or you have uppercase, lowercase, special character, whatever it is. I think every week, 10 days, you should change your password. I do it frequently. और मैं इसी तरह ही करता हूँ. I note it down, I take a screenshot, print it out, keep it in a lockbox. It's my habit. Every 10 days, it's a process. I do it day in, day out, religiously. तो मुझे पासवर्ड्स का ये I मेरा can say I can say 3 months. You three can months is change too long, I think. 3 months. Just to I'm sure you guys must be reading what's going on. Passwords will soon be deprecated, and Yeah. Microsoft has moved towards deprecating passwords because it's passwords का phenomenon, passwords and pin codes specifically. Yeah. उनका सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि they do eventually, like your username, they go and get saved in a server database. और मैं अभी वो एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा जैक रिसाइडर एक हैकर है, बड़ा फेमस हैकर है, ही डज पॉडकास्ट, तो उसका एक मैं वो सुन रही थी सेशन. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सुएज प्लांट जो था दैट गॉट हैक्ड. वो एयर गैप था, एंड डिस्पाइट बीइंग एयर गैप्ड इट वाज हैक्ड. Ex-employee inside a thread, and I don't want to go into much details of that, how it happened, वो पूरी उसने दी हुई है उसके अंदर. But the thing is that usernames, passwords, PIN codes, they all do get, they're considered as static security because they are interceptable, they are buggable, they are hackable. एक चीज मैं slightly, and again it depends on your demography or what kind of आपके पास logistics क्या है आपकी. Not that I would agree कि अगर just because आपकी जो audience है या आपकी जो public है वो किसी मैनुअल जॉटिंग डाउन की है, आप कह देंगे अच्छा चलो ये ठीक है. नहीं, मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी, एज अ रिस्क एनालिस्ट, आई विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एंडोर्स दिस कि आप अपना पासवर्ड कहीं लिख लें. राइटिंग अ पासवर्ड इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड डू. तौफीक साहब, आप जो कह रहे हैं जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज that's yeah de facto a good way of remembering your password or storing them somewhere. Password generators भी आते हैं, password key lockers भी आते हैं. But if you want to generate something of your own and you want to note it down, तो अब जैसे Microsoft की OneDrive cloud के ऊपर ही there's a security vault. Google has a vault. The reason why I'm mentioning the vault culture is that you put a password or you put a locker even on the file that contains your password, and that one should be something which is unique to you. पासवर्ड हैकिंग का तो आप जो कह रहे हैं तौफीक साहब को, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन की होगी. लेकिन अगर KBA कल्चर यूज़ हो रहा है, अगर नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ हो रही है, और अगर किसी गवर्नमेंट के जो है वो सब, जैसे आप अगर नादरा का भी थोड़े दिन पहले सर्वर हैक हो गया था, उन्होंने एग्री नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन डार्क वेब पे पूरी इन्फॉर्मेशन थी. एक्सेप्ट करें ना करें उनकी मर्जी. तो वो दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड. नॉलेज बेस्ड ये होती है कि आपको आपको आपका स्कूल जानते हैं. एंड हैकिंग इज आई थिंक आई डोंट वांट टू जंप ओवर द टॉपिक, बट हैकिंग इज it's a elaborate process. Anybody who thinks कि हैक जो है वो 1-2 दिन में हो जाता है, नहीं. हैक इट टेक्स टाइम. और जो इंटेंशनल हैक होता है ना, एक तो वो रिक्रिएशनल होता है, वो बाहर बैठा हुआ है, काली उसने खोली हुई है, क्लिनिक्स खोला हुआ है, और चीज़ सताने के लिए आपको किसी ने कुछ हैक कर दिया. लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, एंड द अकाउंट्स, दैट इज अ प्लान्ड अटैक. इस वक्त जो अब मैं आई हर्ड आज साबिर शाकिर भी हैक हो गए थे, उनकी ट्विटर अकाउंट, YouTube channel. एंड दिस विल नॉट स्टॉप. Even on your like social media accounts, on your timelines, when you put something on, they can even, like I said to every single person, even my on my learners, that whenever you're going to put any post on, don't like use, like, if I got some learners who got children, I go as well. So I never put my kids' school jumper picture on.
with the school logo, because they have their full name on that. When you put on the Google, you can find out where the school is, which Yeah. school they are going, which city, which town. They can find every single bit of that from that picture, just from that picture. They don't need to go to your, all these kind of like cyber stuff, like on your passwords. And this is just like a simple picture. And then you post any kind of yeah, like I am sitting in whatever the restaurant is. If you really want to put that thing on just to show off, these kind of these days everybody like wants to put. What I do, I always put afterwards. I put that on that I was on that location, but afterwards, not at the same time, and I was there. So these kind of little informations you need to, like, for the way, because when Tafiq sir, you said that at the start, it's like we need to aware and we start from the scratch. So that's why I'm like, discussing the very low level things, um, Hmm. from the hacker's point of view, or from like, any kind of cyber risk, because we तो don't have इसके only. yeah, but जो मैं पहले कह रहा था कि I keep it in a lock box or locker or vault. I was talking about physical vault Yeah, at home. So I wasn't talking about lockbox app or anything like app, that. no, no, yeah. Yeah, मैं जो बात कर रहा था print out and in actual lockbox at home. So if I can't access my phone when I'm so I'm just That's correcting. obvious. But then again, that was what I was saying. मैं कभी कभी बात करनी शुरू करती हूँ, लोग कहते हैं समीरा डरा रही है, With लेकिन so डरा नहीं रही. It's just that we need to change the cassettes in our minds. yeah. Yeah, yeah. Become So cyber. I just wanted to let you know that's not what I was referring to. So that Mhm. can get hacked too. So, but my lockbox cannot get hacked. I know that it's at my in my home in my bedroom, so nobody can touch it अब except तो me. फिक्स है, आपने जैसे पहले बात की ना कि आप उसको उर्दू में लिख के तो आप रख देते हैं, सो दैट अब अगर अब इसी बेस पे आप आ जाएं कि एक बंदा है और उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, डोंट नो एनी अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज, व्हाट विल यू Mm. सजेस्ट टू दैट पर्सन, हाउ टू To सिक्योर द to पासवर्ड दैट. to to change the password frequently, not 3 months, every 10 days, or secure in your notes on your phone if you have an iPhone or Android, Samsung, any other phone. But also write it down somewhere on a piece of paper. And most probably, your most important thing is your passport, right? Or if that's not important, then ask your sister or your wife. What is the most important thing they if I ever ask, you will know where that is. So yeah, us location में रखें. So you have the access to your password. If you forgot, तो आप उसको access कर सकें. मगर ये कि if you don't know two languages, then that's the best way to do it. But change your password at least after 10 days maximum. Do not wait for a month or maybe more than month. So I think हर 10 दिन बाद password इससे ये होगा कि आपको आदत भी पड़ जाएगी और you will come up with new passwords and new ideas and your mind, your brain will remember those things. So try paraphrase. Paraphrase हमेशा आपको ज़हनी तौर पे याद भी रहते हैं. And when you pick a paraphrase, you typically pick a paraphrase which is close to your heart also. Could be your daughter, could be your son, could be your mother, could be your father. Not everyone is gonna know your mother or father name, right? Even if somebody is trying to guess it. Or your favorite vacation place, or your school where सेम you went जैसे to मैंने school. आपको पहले मेमोरेबल वर्ड्स या इस तरह से बताया था, यू कैन Yeah, लाइक दीज आर ऑल द yeah, स्टफ, yeah. even your favorite, like where the city you were born, or your city you met your husband first time, or your, like, there's so First school. many Uh, you can. First school, yeah, your very first school. So you can add any kind of memorable thing yeah, on but that. use in paraphrase. So, I which is long. I would beg to differ a little over here. Again, I'm Okay. not scaring you, but uh,
when just क्या SQL injection ले लिया या brute force attack ले लिया, uh, the most predicted passwords that exist in any kind of password sparing attack or something like that is they collect intelligence. And again, I'm talking about targeted attacks, I'm not talking about recreational attacks. But the easiest thing to predict about you, and I just mentioned some time ago, when a hacker intentionally hacks your assets, they would have collected enough information about you from somewhere. Malia, we आपने थोड़ी देर पहले mention किया that you post the picture or post whatever later, but this person knows that you were in this location. This Yeah, person also knows about you that you have children, and there might be XYZ names of them, or whatever. yeah, And if your passwords have anything related personally for you, those are the most easiest passwords to predict. The most easiest password to predict. Your favorite color, they can find out what your favorite color is, because in conversations, I might be like, we use so many accounts. We use a Hotmail, we use Gmail, we use Facebook, Instagram, TikTok. People use 10 other portals, and collecting bit by bit information from all of them creates actually a profile of you. yeah. I And agree. once they have a profile of you, predicting your passwords, they can find out what's your father's name. That's all available. Like I said, KBA, knowledge base, that is available about you over the internet. It can be accessed, it can be found out. That is not even rocket science, honestly speaking. For a hacker, There are that thousands and thousands of possibilities for keeping that. And password. yeah, yeah, Keeping a password related to that yeah, is the last thing I would recommend. Nonetheless, keeping a password now at all is one of the, I wouldn't say, never just stick to a password. Your password should be something which is not related in person to you. hmm. It's not about you, it's about probably around you. It should never have what you like, it should never have your family, it should never have your past. Yeah, you can write about your boyfriend or girlfriend who you probably broke up with or something like that. That would be hard to predict. But it should not be something directly in relation to you. And try and muddle the password. Muddle, when I You can say, use month's name, yes, month's name. If नहीं, you मैं are बताऊं going to आपको, use a सबसे thing. सबसे अच्छा पासवर्ड रखो अपनी सास ससुर और नंद के नाम पे, कोई भी ah, गैस नहीं कर सकेगा. probably, yes. You got it. Hey, names and publicly related to you Yeah. should never be a choice. तो आप भूल Uh, भी नहीं सकते. Can you forget your सास name? No. Can you forget your nun name? No. हैकर भी नहीं भूल रहा ना तौफीक साहब, इसलिए Heck, probably oh yeah, don't. नजर है आपके ऊपर, Yeah. नहीं लेकिन नहीं आप नहीं 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 हैक. अब टिपिकली हम ईमेल्स में या प्लेटफॉर्म्स पे सास बहू फुफो और नंद के बारे में बात नहीं करते, तो हैकर वुड नॉट नो. That my pupo called that, and my sastool called that. Yeah. We call फुफो, we call सास, but not the actual names. हाँ, यहाँ पर भी Yeah. ये साथ, हाँ. तो ये जैसे कहते हैं ना, वो प्रिडिक्टेबल से जो जरा दूर हो जाने चाहिए. एक तो एक एक्सप्लॉइट मैंने पढ़ा था, एक वाइट पेपर्स पढ़ी थी किसी चीज़ के, मेडिकल फैसिलिटी का एक था अटैक. और पेशेंट की जो अपनी पर्सनल फाइल थी, जो उसका प्रोफाइल था हॉस्पिटल के पोर्टल के ऊपर, उसने अपनी एक मेडिसिन का नाम रखा हुआ था. And just because the hacker knew that this guy has a heart condition, he predicted one of the was डाला इधर अब उधर predict करते अब समीरा, मैं हर स्पेस कभी कभी बता भी देती हूँ, कभी किसी से मेरी पर्सनल उसमें बात हो ना, तो बता देती हूँ कि जी आई एम diabetic, आई एम टेकिंग these kind of medicine. So if I put my password on my medicine name, it's really easy to guess what kind of medicine I'm taking. मैं मुझसे So, पूछती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है वो अब लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं शेयर करने में क्या हर्ज है. एक एंड अगेन दिस इज द रिस्क एनालिस्ट टॉकिंग टू यू, दिस इज नॉट अ ह्यूमन प्रॉब्ली टॉकिंग टू यू. When we share information, when we share anything about us, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. What is your audience? Is it a limited audience or it's a wider audience?
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, एक तो व्हाट्सएप में भी फीचर एआई लगी हुई है, लिस्टनर लगा हुआ है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग मेटा, आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन मार्क जकरबर्ग, आई कैन probably never trust anything that he does. So I don't use any of his mediums, and yes, I'm alive. Yeah. I don't use WhatsApp, I'm alive. But when even in a WhatsApp group or even in a Signal group or a Telegram group, the first thing you should see is who your audience is. वो आपकी audience पे भी limited है. You know who's reading. Back end के ऊपर कोई और पढ़ भी रहा है, fine, okay. Uh, but when we share something on social media, I always say this, that you are putting yourself up for sale on a supermarket, Yeah, and it is I going to agree. be I open agree. anybody, and it may not get exploited at the time you've put it, probably not even 6 months down the line, but eventually somebody, and maybe you're not even the target. इमरान रियाज खान के केस में एक और उसके कनेक्शन के अंदर मैंने उसी वो मोडस ऑपरेंडी इन सब का मैं सेम देख रही हूँ, एंड आई थिंक इट्स द सेम बॉडी हु इज डूइंग इट, doesn't matter who it is. I have my suspects, but never mind, later. तो वो जो जो लोग टारगेट हो रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, वो टारगेट है ही नहीं. What they have in their phones or in their DMs or in their messaging portals or in their phones, The that target is, yeah, that's who do they they are know? not the target. Who Yeah, are they connected to? yeah. Where did they go? Why did they go? Sometimes a hacker, probably you just sitting in a cafe, a hacker probably is sitting behind you. You're not the target. Who you're meeting is the target. In the cyber world or in a virtual world, you can't erase your or delete your footsteps. They're Nothing gets still there, nothing. no matter what. You I can't. अच्छा, हम थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहे हैं. आई थिंक हमें थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को लाइट रखना चाहिए. right, वापस आ जाए. या can't वी गो wait वो. because अच्छा. the events ऐसे हो रहे हैं इसलिए. Yeah. We'll discuss in our upcoming sessions also. Like I Yeah. said, this is the basic one. हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे. तो मैं लास्ट सेगमेंट पे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि talk a little bit about when we download an app on from iPhone or Android phone, about the permissions we give them to install the app and what access do we give them. जब हम कोई download करते हैं, we don't even take a second and we'll just press this, okay, do it, just download it. You, Yes. क्या लोगों को मालूम है कि वो क्या इजाजत दे रहे हैं उनको एक्सेस की? Okay, you're giving access to access all your contacts, all your pictures, all your files. Basically, आप उनसे कह रहे हैं यार ये रहा मेरा फोन, या आप ले जाएं घर पे, जो आपने देखना है आप देख लें. तो इट्स ऑल Yes. योर्स. बस मुझे ये एक्सेस दे दें इस एप्लीकेशन का. ये मेरा फोन जो है ये आपका हुआ. तो आप तौफीक सर, बेसिकली हम ये कर लोग रहे हैं. या कैन करिए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं लास्ट सेगमेंट पे ये बात करना चाहता हूँ कि आप दोनों से कि व्हाट वुड यू सजेस्ट, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, अगर वो एप्स डाउनलोड करते हैं या यू नो व्हाट दे नीड टू डू. दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस के अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू बी वरीड अबाउट एंड व्हाट यू शुड डू व्हेन यू डाउनलोड द ऐप. तो फिक्स है, जब भी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, उसके ऊपर आता नहीं टर्म्स एंड कंडीशन, एंड वी जस्ट लाइक क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट एवरी सिंगल बिट. और उसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट पे या इस तरह से आप जाए ना, तो आती है कुकीज सेटिंग्स. आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट? मैं आप इट्स योर, वो आपको ऑप्शन देते नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दें. You need to go further on that. I want to learn more. Click on that, and then you will have more details, and you are able to click on reject all rather than to accept every single bit. और इसके अलावा अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं या आप जैसे आप अपने कैमरा एंड माइक की ऑप्शंस जहाँ पे आती हैं, स्नैपचैट ले लें चले फॉर एग्जांपल, टिकटॉक, स्नैपचैट, दीज काइंड ऑफ. उसके अंदर अब आप उनको बता रहे हैं कि यू कैन असेस माय कैमरा एंड माय माइक, बोथ ऑफ देम. ठीक है. उसके अलावा आपकी फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, ऑब्वियसली वो कनेक्ट, एक ऐप से दूसरी ऐप को जब कनेक्ट भी ऑप्शंस आती हैं उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं. एंड देन उसमें फिर क्या होता है कि आपके जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आपको शो होने शुरू हो जाते हैं दूसरी ऐप के अंदर भी.
अब अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई वायरस आ गया है, जब आपने डाउनलोड किया कोई लिंक आपने गलती से क्लिक कर दिया, उसके वो वायरस बेस्ड था उसके अंदर आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस बंदे को अपना फोन पकड़ा ही रहे हैं, जैसे आपने पहले बात की है ना, यू आर गिविंग द फुल फोन असेस कि ठीक है आप मेरा कैमरा तक यूज कर लें, मेरा कैमरा भी यूज कर लें, मैं माइक भी यूज कर लें, मैं नहीं भी यूज कर रही तो इट्स एब्सोल्यूट। So whenever we are using any kind of applications, when we are downloading it, read the terms and conditions. It will not take forever, like your 5-10 minutes, your very precious 5-10 minutes of your time, but read it and see what you are going to accept. Obviously, if you are comfortable with that, and you can go to the review as well, go and read the reviews, what that app is about. You really want that. And if you have any kind of apps which you don't use, delete it from your phone. That's a That's good one. Thank you that's my for thing. yeah thank you for giving the advice. एक और चीज मैं शेयर करता हूँ, फिर अपना समीरा की तरफ चलते हैं कि जब हम एप्स डाउनलोड करते हैं या कोई चीज़, तो वो अक्सर आपसे पूछता है कि डू यू वांट मी टू ट्रैक एंड शेयर योर Don't इंफॉर्मेशन do टू, that. Don't तो do that. प्लीज रीड दैट एंड आंसर अप्रोप्रिएटली, which is no, you don't From here, want. I can say go every single person who's listening to me now, Yeah, when it will be on air. If you are on Facebook, go on the settings, and where it says like track your every single. So what they are doing is, whatever you're using in your phone, any of your apps, any of the websites, they have like full sheet of that this app you use at this time. Like like, for example, I got mobile banking app in my phone. I use that, but I don't want that app to be like, the Facebook follow the app, or when I used it or when I'm not using it, these kind of stuff. Wherever, go on the settings and like turn that thing off. Then चले they मैं will इसको थोड़ा थोड़ा they सा will not आसान track it. अल्फाजों में बताने की कोशिश करता हूँ। जो मलिया कह रही थी वो बेसिकली ये कह रही हैं कि आप अपनी वो जो प्राइवेसी है ना, उसके उस सेटिंग्स में जाके उसको उनको इजाज़त नहीं दें कि वो हर चीज़ का एक्सेस उनके पास हो। वो आपको ट्रैक करें कि आप सुबह उठ के नाश्ता कितने बजे करते हैं, दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं, शाम को वॉक पे कितनी देर के लिए जाते हैं, फिर जिम कितने बजे जाते हैं। Yes. मीन्स अपनी लोकेशन भी शेयर ना करें, अदरवाइज़ उनको Yeah. पता होगा कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आप जिम में होते हैं और इतने बजे से इतने बजे तक XYZ लोकेशन पे होते हैं। और अगर आपने परमिशन सीख नहीं की, तो लेट्स से आप गूगल पे सर्च करें, लुकिंग फॉर नाइकी शूज़, यू लुकिंग फॉर ट्रैक सूट, यू लुकिंग फॉर जिम शूज़, तो वो जो आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ एल्गोरिथम बिहाइंड इट। तो आपने अगर उनको परमिशन दी हुई है, तो जब भी आप इंटरनेट ओपन करेंगे, फ़ोन पे कोई चीज़ खोलेंगे, तो वो सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी जो आप इधर सर्च में कर है, रहे थे। सर्च भी नहीं आप बोले, आप सिर्फ के हाँ, सोचे कि जी उनको कोई वो आपके दिमाग में तो नहीं से बोले आके जी मैं मेरा 1-2 वो लफ्ज़ जा रहा टाइप है। आप करेंगे ना, आपकी सुने हर मोबाइल में जितनी एड्स आएंगी ना, आपकी किसी भी यूट्यूब उसके ऊपर, आपकी फेसबुक के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, आप बंदा कहता है कि मैंने क्या किया है, ये तो इतना ज्यादा वो हो गया शेयर के इतनी जल्दी एग्ज़ैक्टली, इनको सारा कुछ पता लगे, पर ऐसा होता नहीं है। एग्ज़ैक्टली। हम अपनी असेस उनको इतनी दी हुई होती है कि वो फिर जो है वो एड्स हमें नजर आने लग जाती हैं। तो बस तो एक चीज़, प्राइवेसी जी, को जी। अपने अंदर कंट्रोल में रखें, और प्राइवेसी की जितनी सेटिंग्स हैं अकॉर्डिंगली उसको जो है, जैसे अब फेसबुक के ऊपर या किसी के, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उनको कैलकुलेट वो आता है ना आपको कि जी टुडे यू आर दिस दिस लाइक 20 years old, 16 years old, 30, 50, whatever years old you are today. How? Because you give the access. अब आपने उसको पब्लिक, कितनी चीजें आपने पब्लिक करनी है और कितनी चीजें ओनली फॉर मी रखनी है, इट्स अप टू यू। हर यस, बंदा सो अपनी सेटिंग्स में जाए और उसको चेंज करे। बेसिक बेसिक चीज़ ये है कि मेक श्योर आप सेटिंग्स में जाके एक-एक चीज़ पढ़ें, और जो चीज़ की परमिशन आपने नहीं देनी, वो ना दें। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको नहीं मालूम, कि जो आप कैमरा एक्सेस दे देते हैं, अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ भी होगा, you can get recorded in your Yes. house.
someone Yes. can hack into it. अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो मैं दोबारा कह देता हूँ, अगर आपके जैसे सैमसंग टीवी है मेरे घर पे है, उसके ऊपर कैमरा भी है, तो वो उसके ऊपर मैंने काली टेप लगाई हुई है बिकॉज आई डोंट यूज इट, तो राइट? फिर से इस लेकिन वक्त दे हैव एक्सेस। मेरे बच्चों की टैबलेट इस वक्त नीचे है, वरना मैं दिखाती आपको कि इतना सा ना एक स्टिकर टैब मिलता है। वो स्टिकर नहीं है, बेसिकली वो बटन है ऑन ऑफ वाला। मैंने टैबलेट्स के ऊपर उनकी वो उसको पेस्ट किया है। वो पूरा एक वो उसका ना बना हुआ है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो यूज गेम्स खेलते हैं। गेम्स के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की चीजें, सिर्फ नॉट ओनली दी सोशल मीडिया हाँ, एप्स, गेम्स के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर बहुत कुछ, बहुत सारी एसेस जो है वो उनको मिल जाती है। तो मैंने उनके जहां पर कैमरा है उसके ऊपर उसको पेस्ट करके और उसको ऑफ पे रखा हुआ है कि वो अगर वो ऑन भी करेंगे तो समटाइम्स आपको असेस देनी पड़ती है बच्चों को। बट पेरेंटल लाइक इसी में मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि जितने पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चों के पास डिवाइसेस हैं, क्योंकि मैं नहीं इतना हाई लेवल पे नहीं जाती, वेरी लो लेवल पे मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि पेरेंटल कंट्रोल आप अपने बच्चों का ऑन रखें, उनकी टैब्स पे, उनके आईपैड्स पे। अगर आप उन्हें कोई सोशल मीडिया ऐप यूज करने दे रहे हैं, उसके ऊपर भी टर्न इट ऑन। आप अगर उनको कोई यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब देखने दे रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा देखता है जी, पेरेंट्स लगा के दे देते हैं जी कार्टून, छोटे छोटे बच्चों को भी कार्टून्स देखें। उसके ऊपर भी अगर आप सेटिंग्स में जाएं, वहां पर पेरेंटल कंट्रोल है, उसको ऑन कर दें। उससे होगा ये कि आपको उनकी जो लेवल का कंटेंट तो वो चले देखेंगे, क्योंकि आजकल कार्टून्स के अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं कि आपकी सोच है। हम अगर बच्चों को ये कह के जी कि कोई नहीं बच्चा मेरा वो सेफ है, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। ऑक्यूपाई द वेब करके एक हैकर है, he works इसका स्टूडो नेम है, he works for some government agency in US, तो अपना रियल नाम नहीं बताता। उसने 19 पॉइंट्स ऑफ अ हैकर्स माइंडसेट लिखा था, और इसके अंदर एक इतना एलिमेंट्री था कि इफ यू है तो कहने को एक ही लाइन, लेकिन अगर आप समझे उसको कि द person being exploited will tell you everything about them. So it's no हैकर के अंदर कोई मुझे ना कोई वही तो अस्तगफिरुल्लाह नाजिल नहीं होती उसके ऊपर। He knows everything, he or she, and there are a lot of she's as well, by the way. लॉट्स Uh, ऑफ। yes, uh, they know everything about us from us. It's not that they were told something; they figured it out from us. So whenever you are online, there are behavior key area ke andar, there are two things I would want to speak about. One, your behavior. Two, your infrastructure. Behavioral pay. Be very careful what you say about yourself. Be extremely careful what you say, because somebody somewhere is listening. Always, there's always somebody listening. Whether for Malays, एक पॉइंट के ऊपर शायद 6 महीना पहले कोई उसकी कोई इंटेंट नहीं होगी सुनने की, but this person who's and hacking is a skill. हर एक कोई हैकर नहीं बन सकता, आता भी हो तब भी। hacking is an inherent skill, it's a behavior trait. और हैकिंग पे समीरा विल गो ऑन हैकिंग इन आवर नेक्स्ट एपिसोड्स, तो आई थिंक मैं उससे कह रही हूँ कि the reason why I'm saying this, why I'm mentioning this, is कि आप जो भी बोलते हैं ना, वो किसी के दिमाग के अंदर स्टोर हो रहा है। So be very careful what you say about yourself. How much of information about, कभी-कभी मजाक में हम लोग कुछ बात कह जाते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे जाते हैं, अपनी डेमोग्राफी दे जाते हैं, अपनी अपनी फैमिली की बातें करने लगते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ओपन स्पेस के अंदर। तो एक चीज वो बहुत ख्याल रखने की है कि बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक। इट्स लाइक सिटिंग इन अ कैफेटेरिया with a mic and telling everybody who you are and what you do. so This is how, you're referring to a space session right now, is that the not example you'll go? even a post that you make, the fix up. You could put a Facebook status, you could put a WhatsApp status, you could put any kind of status. Anything that you post over the internet, be extremely careful of what you're saying about yourself. Ask yourself 10 times, am I giving too much of information? Am I giving too much of private information, personal information? पिक्चर्स आपने पोस्ट कर दी हैं, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं क्वेश्चन कर रही, लोग ट्रैवल करते हैं, सब करते हैं, अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना है जी, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था। एवरीबडी लव्स डूइंग दिस,
but somebody is making a travel itinerary of yours. ये यहाँ गया, इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे ऐसा था, हाँ, this person has access to this, ये इसके logistics हैं, इतना पैसा भी हो सकता है, टिकट का भी पैसा लिया होगा, ये बैकग्राउंड में किसी के चल रहा होता है. So be extremely careful what you post on the internet. मैं इतना फेसबुक नहीं यूज करता हूँ, लेकिन मैं जब यूज करता था तो मैं देखता था वो किसी ने स्टेटस लगाया, वो फलाने कैफे पे है, वो फलानी लोकेशन पे है, जस्ट चेक्ड इन एट दिस प्लेस. मैं सोचता था यार, आई मीन व्हाई आर दे Check in. टेलिंग द वर्ल्ड वेयर व्हाट यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर. आई मीन आप क्यों बता रहे हैं किसी को आप हर वक्त कहाँ पे हैं. तो मैं खैर इतना यूज नहीं करता हूँ फेसबुक, लेकिन आई रिमेम्बर दैट चेक इन फीचर. तो हम एक्चुअली दैट्स अ ट्रैकिंग फीचर एक्चुअली ऑन द बैक एंड. Yeah, yeah. ट्रैकिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आपने चले फेसबुक से अपने ट्रैकर डिलीट कर दिया, आपने बाकी अपनी अपनी अननोन एप्लीकेशन से ट्रैकर्स डिलीट कर दिए. There's a one tracker that I think almost all of us use on our phones, which is called Google Maps, and that's a tracker which has become imminent for us. क्योंकि GPS लगाना imperative हो गया. आप मैं तो शायद से दफ्तर ही जा सकती हूँ अब. Automatically location भेजी, GPS चल रहा है. So that's a constant tracker, and don't forget Google is connected to everything. It's connected to your Gmail, it's connected to your cloud, it's connected to everything. Every single bit, yeah. Somewhere. Definitely. But again, I'm not saying this for scaring, but chale, Google एक level तक, again, only just till a level can be trusted. Trusted in the way कि उसको jail break करना इतना आसान नहीं होगा जितने आपके बाकी assets आसान हो जाएंगे. So be extremely careful. दूसरी चीज़ है कि when हम लोग ये बात कर रहे थे कि फिजिकल पासवर्ड्स की हम जो बात कर रहे थे, then we come on securing assets. पासवर्ड रखें, कॉम्प्लेक्स रखें, लेकिन no matter what kind of password you keep, a static password and administrative defense can always be broken. Always, always, always keep a secondary verifier. Always. A secondary verifier could be your app password, and one say, let's say NIST में तो अब वो भी hackable हो गया, interceptable हो गया, but keep an authenticator. Use an authenticator app. When we're talking about apps, हर authenticator app भी trusted नहीं होती है. You can trust Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy करके एक और authenticator है. Always add all your accounts to an authenticator. What does an authenticator does is that along with your password, it's a secondary defense which cannot be broken. Why? It's because you have complete control over that on your device, and that token expires every 30 seconds. So it's a unique key that generates every 30 seconds. Yeah. That is the uniqueness of an authenticator. Again, sophisticated levels, we'll let you talk about it. क्योंकि वो Layperson, थोड़ा we are going too far ahead. authenticator जो है, always keep an authenticator. तो आज का जो अभी recently जो वो हुए हैं, hacks हुए हैं, उनके अंदर पूछा क्या defense लगाया था, यार password लगा हुआ था. Not enough. In today's time, password is zero security. You ask me, it's zero security. Authenticator में भी SMS is zero security. Never choose an SMS. Again वो static हो गई. इसके ऊपर बाद में discussion करेंगे कि किस तरीके से layer. But if I just have to give you recommendations right now, passwords is not the only defense. You must have an authenticator, a secondary verifier to all your accounts, including your email addresses, including your social media, including whatever app you have. और जहाँ तक security की बात कर रहे हैं, this is the last bit I wanted to add. When you're downloading an app, whether on your phone or your computer, always check who the developer is. If the email address is anything like a gmail.com or Outlook or a Hotmail or something.com, please don't download it. It's somebody private who's using it. If you can't establish a corporate domain, please don't download it. It will always probably have a backdoor. Be very careful what you download. These are fixed. जी, thank you Malia और Samira, thank you so much. Even though मैंने बहुत कोशिश की कि हम बेसिक्स पे रहें, लेकिन कई दफ़ा हम बीच में we went up and then I had to bring you guys down. क्योंकि मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे अपना एक बहुत बेसिक लेवल पे एक एक्सपीरियंस quickly I have to close. Okay, very quickly.
कि मेरी ना एक क्लास थी जिसके ऊपर मैंने सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर एक लेक्चर दिया। अब वो लर्नर्स जो थे ना और उसमें मैंने एक वीडियो दिखाई। अब बहुत मुश्किल है यहाँ पे आप रिसोर्सेज वगैरह अपने दिखाने, तो उसमें मैंने उनको एक दिखाई जिसमें कि जैसे आप घर के बाहर एक बड़ा सारा बोर्ड नहीं लगाते, वो एक लड़की थी इस तरह से, उसमें वो बोर्ड पे पिक्चर्स लगा रही है एंड दरवाजा खुला है, एक बंदा अंदर आ रहा है और वो सारी दीवारों पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। मेरे जो लर्नर्स थे दे वर लाइक सो annoying, one of them especially, and she said why you are showing us this. जब वो सारी वीडियो गई, मेरा पूरा सेशन खत्म हुआ, मैंने जो एक्टिविटीज करानी थी कराई। Last 10 minutes, every single person in that class, they changed their settings. They changed their privacy settings. They changed every single bit. तो ये है कि हम लोग को वाकई थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग तो बिल्कुल ही नए नए आए हैं इस इंटरनेट के वर्ल्ड में या सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों को अवेयर करने की भी साथ साथ ज़रूरत है। और इस तरह की जो आपने ये शुरू किया है ना, आई रियली अप्रिशिएट कि ऐसे की चीज़ें हम करें स्पेसेस में भी। कोई स्पेसेस इस तरह की कंडक्ट करें जिससे कि अवेयर हो लोग और अपने आप को जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकें वो करें। और मैं आपने जो ये मेंशन किया, इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को। मैं ये बता दूं सुनने वालों को कि आने वाले दिनों में इसके और काफ़ी सारे सेशंस होंगे और डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कशन होगी और वी विल गो मोर डीप, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम जितनी अवेयरनेस आप लोग तक पहुंचा सकें और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, इट विल बी ग्रेट। तो मलिया, जो आपने बात की ना स्पेसेस की, so one thing I will be starting very soon, कि I will have a space recorded session which will also be available on YouTube. Okay. Okay, so means if I do a space session on cybersecurity and we have like 7 people there, right? हम discuss कर रहे हैं different top चीजें और different levels पे, but it will be available on YouTube. So that's something I recently got selected by an organization that they have authorized me to do that. That कि मैं जो भी space session अपने record करता हूँ, special topics, they will be available on my YouTube channel also, and people can listen. So that's something is also coming up. So stay tuned to my YouTube channel, Coffee with Taufiq. I also have an email address, coffeewithtaufiq@aol.com. नीचे टिकर पे चल रहा होगा, और @taufiqraz is my Twitter ID, and Samira का भी Twitter ID यहाँ लिखा है SAMEERU. Malia is very protective, so she didn't mention. So that's another cybersecurity she used right now. She wrote her first name. तो फिर आप खुद ही ट्विटर पर सर्च करिएगा इनको, आपको हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए मलिया के नाम से। OSINT is OSINT is not. I'm sure we all have become, because of the political fever, we all have become a little bit into OSINT these days. Yes. Exactly. Yes. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you very much for joining, और inshallah ta'ala we'll meet again on the same topic with on a different level of conversation, and inshallah अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा, और या ईमेल करिएगा या यूट्यूब पे कमेंट पे लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मलिया, थैंक यू समीरा। अल्लाह Thank you so हाफिज़। much, Tawfiq sir. Thank you. Allah Hafiz.